Good morning, students of Standard 7. Okay, today we are going to the chapter 2 of your SST. That in the previous class we have discussed the atmosphere layers. हमारे जो एटमॉस्फेयर है 5 लेयर्स है और क्या पढ़े थे एयर टेम्परेचर ऑल्सो पढ़े थे हम लोग। ग्रीन हाउस का उसका इफेक्ट कैसे होता है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, ये ऑलरेडी वी हैव रेड। सो टुडे वी आर गोइंग टू परमानेंट प्रेशर बेल्ट। ओके, दिस वन परमानेंट प्रेशर बेल्ट। इसमें क्या है ना, एट प्रेशर बेल्ट भाग वेराइज with temperature, you know, air when heated expand and becomes less dense. Hot air being lighter rises upwards, hence it exerts lesser pressure. Okay. On the other hand, air when cooled becomes dense and heavy. Cold air sinks, hence it exerts more pressure. So in the equatorial region, especially between 5 degree north and 5 degree south latitudes, it is hot throughout the year. So the atmospheric pressure in this area is always low. This low pressure zone is called the equatorial low pressure belt. In the polar regions, North Pole and South Pole जो है ये polar regions, it is extremely cold throughout the year and the atmospheric pressure is always high. These regions are called polar high pressure belts. The hot air rising, the hot air rising over the equatorial belt moves towards poles. By the time the air streams reach the latitude around 30 degree north and 30 degree south, both equal, they become cool and heavy and begin to sink. This creates belts of high pressure known as subtropical high pressure belts in these two regions, both North Pole and South Pole. Okay. Cold air from the polar regions and comparatively warm air from the subtropical regions meet near the 60 degree latitudes in both the hemispheres, equator, both hemispheres. The larger mass of warm air rises, creating a strong upward current. The cold polar air gets what? Pulled up by this current. This creates belts of low pressure called the subpolar low pressure belt. One is low pressure, क्या है? Subtropical high pressure belt, and another is subpolar low pressure belt. In these regions, both the permanent pressure belts do not remain at the same position throughout the year. Okay, they shift slightly northward when the northern hemisphere tilts थोड़ा टेढ़ा होता है, जो सूरज का किरण जो होता है वही, towards the sun, and the little southward when the southern hemisphere tilts towards the sun. हमारे अर्थ, इतना याद रखना, हमारे अर्थ जो है वो सीधा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा रहता है, उसी हिसाब से इसको समझ लेना। नाउ कम टू द पॉइंट, विंड। विंड क्या है? विंड व्हेन हॉट एयर राइजेस एंड क्रिएट ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, कोल्ड एयर फ्रॉम नेबरिंग ए हाई प्रेशर जो एरिया है वो क्या होता है? मूव्स टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। जैसे मान लो दिस इज अर्थ सरफेस, ओके, सन rays we are putting, so this area जब हॉट हो जाता है, हॉट होने से क्या होगा ना, टुवर्ड्स अप,
होके जाएगा। तो इस पोजीशन में इस एरिया को टू कंप्लीट दिस एरिया क्या होता है, कोल्ड एयर जो है वो दोनों तरफ से वो आता है, दिस इज कोल्ड एयर। ये हॉट एयर, ये वन हॉट एयर, और ये है क्या, कोल्ड एरिया, कोल्ड। ओके, so cold air from the neighboring high pressure areas moves towards the low pressure area. So this horizontal movement air का जो है of the air, it is called what, wind. Okay, the instrument used for recording the direction from which a wind is blowing, कहाँ से वो आता है, blow होता है, it is called wind vane. Wind vane, you will get the picture of in your book, wind vane. Okay, so it consists of a pointer and a vane fixed to the opposite ends of the horizontal rod, pivoted at its center. वो सेंटर में जाके वो रहता है, उसका जो है मेजरमेंट जैसे किया गया है, एरो तो है देखो, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ इसका डायरेक्शन भी है, इसको बोलते हैं विंड वैन. Wind turns the vane towards the side of to which it is blowing. Thus, the pointer points to the direction from which the wind is blowing. ये पॉइंट में हम लोग को मालूम होता है, पॉइंटर जो है इसमें कौन सा डायरेक्शन से हवा चलती है. So, the speed of wind depends on the pressure difference between the two regions. But now, when the difference is high, जब ज़्यादा होता है, हाई होता है, wind rushes from the high pressure region to the low pressure region at a great speed, बहुत जोर से आता है. As in a storm जैसे जो साइक्लोन ये सब होता है ना, उस हिसाब से रूप में ये बहुत स्पीड में आता है. Then the speed of wind can be measured with the help of an anemometer. The anemometer consists of 3 or 4 cups attached to a rotating shaft. When wind blows, the cups and the shaft rotate. The shaft is connected to a meter, similarly to a car's speed meter. जैसे गाड़ी में कार का स्पीड मीटर रहता है, उसी हिसाब से वो है. which shows को क्या हमको हम लोग को दिखाता है, the speed of the wind. wind का जो स्पीड कितना है वो दिखाता है, उसमें मेजरमेंट है. So winds can be broadly classified as permanent winds and local winds. Mind it. One is permanent and another is local. So you come to the point first, permanent. Permanent जो point winds है, the winds that blow from the permanent high pressure belt towards the permanent low pressure belts maintain their direction of flow throughout the year. They are called permanent, prevailing or planetary winds. Due to the rotation of the earth, अर्थ का जो रोटेशन होता है उसमें क्या है, winds जो है, ये winds are deflected to the right of the paths in the north hemisphere and to the left of the paths in the southern hemisphere. Okay, thus the winds blowing towards the equator are deflected towards the west, and the wind blowing towards the poles, north pole, south pole, they are deflected towards the east. East में वो आता है. So there are 3 types of permanent winds: trade winds, westerlies winds, and polar winds. Now trade winds क्या है देखो. The trade winds blow from the subtropical high pressure belt to the equatorial low pressure belt, and winds are named after the what? Direction from which they blow. जिस direction में वो blowing होता है उस हिसाब से उसका naming होता है. In the northern hemisphere, the trade winds blow from the northeast and are known as what? As the
नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये गया पहले हम बोले जो नॉर्दर्न, ये है साउदर्न। ओके, दे ब्लो फ्रॉम द वेयर साउथ ईस्ट एंड आर नोन एज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। द ट्रेड विंड्स ब्लो विथ ग्रेट regularity, then westerlize. The winds blows, it is blowing from the subtropical high pressure belts to the subpolar low pressure belts. It is known as westerlies. As they blow from a somewhat westerly direction in both hemisphere, दोनों towards north and towards south, both. From where? Equator. Equator area जो है towards मतलब साउथ, सॉरी नॉर्थ, एंड डाउनवर्ड मतलब इधर हम लोग का अर्थ में जो नॉर्थ पोल है इस डायरेक्शन में वो लोग ब्लोइंग करते हैं। देन द वेस्टर्न ब्लो फ्रॉम द साउथ ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। सिंस these winds originate in the warm tropical regions, the blow towards cooler regions. They are experienced as warm winds. They are not, however, as regular as but the trade winds. Now come to the point. Polar winds. What is polar winds? The polar winds blow from the polar high pressure belt to the subpolar low pressure belts. They are also known as the polar easterlies because they blow from the somewhat easterly direction, पूर्व दिशा में जो डायरेक्शन में जो आता है, they blow from the northeast in the northern hemisphere and from the southeast in the southern hemisphere. Since these winds originate in the polar regions, they are extremely cold. Polar region, you know, throughout the year cold position में रहता है। Now local winds. Local winds क्या है? Local winds. Local wind means what? Winds that rises due to local or regional changes in temperature or pressure are known as what? लोकल विंड्स। जिस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में जो ये बनता है उसको उसी हिसाब से बोला जाता है। यस, देन दे अफेक्ट स्मॉल एरियाज फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। सम लोकल विंड्स लाइक लैंड सी ब्रिजेस एंड मानसून्स आर पीरियडिक। ये पर्टिकुलर पीरियड में होता है, नॉट ऑल द ईयर। ऑल ऑफ द ईयर जो है वो नहीं होता है, एक ये में प्लेस में रहता है और एक पर्टिकुलर टाइम में भी वो होता ही रहता है। देन फॉर ए फिक्स्ड पीरियड व्हिच मे बी डे और ए व्हाट सीजन। एक सीजन जो है ऐसे सीजन में आता है, जैसे हम लोग का मानसून मौसमी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम में आता है और पर्टिकुलर टाइम में वो चला जाता है। बट अनलाइक प्रिवेलिंग विंड्स, they do not always blow in the same direction. एक ही जो दिशा में एक ही जगह में वो लोग नहीं जाते हैं। लैंड एंड सी ब्रिजेस कैसे? द वाटर टेक्स लॉन्गर देन लैंड टू गेट हीटेड एंड टू कूल डाउन। ड्यूरिंग द डे द लैंड देयरफॉर बिकम्स हॉटर देन द सी। द एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉट एंड राइजेस। हॉट होने से वो ऊपर जाएगा, राइजेस होगा, leading to lower pressure. कहाँ? Over the land, land का ऊपर. Since the air above the sea is cooler, the pressure over the sea is higher. So the cooler air from the sea moves towards the land during the day, and this breeze called sea breeze, इसको sea breeze बोला जाता है। ठीक है? brings down the temperature in coastal area during the day. दिन में क्या होता है, उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। At night
the land cools down much faster than the sea. You know it very well. The air over the sea is thus warmer and lighter also. The warm air over the sea rises, so the pressure over the sea is lower than the pressure over the land. Air from the land, therefore, what blows out towards the sea. This is known as land breeze. Now come to the monsoon. Just अभी हम बोल रहे थे. The monsoon is a seasonal wind. Monsoon is a seasonal wind. It blows in a fixed direction during a particular season, but reverses its direction with the changes of seasons. Monsoon are like land and sea breezes on the large scale. They are mainly associated with southern and southeastern Asia. During summer, the interior of the continent of Asia gets extremely heated and a low pressure zone develops in this region. Moist wind from the high pressure zone over the Indian Ocean blow towards the zone and cause heavy rainfall in summer. Okay, so next class we will read about the cyclonic winds. Okay, thanks.